Good morning everyone. Today we are going to discuss about the preparation of phenol from the different raw materials by the different ingredients. Then first question, क्यों फिनॉल की स्टडी अल्कोहल के अलग हो रही है? क्यों अल्कोहल के साथ ही फिनॉल की स्टडी नहीं हो गई? When you will see the different way for the preparation of phenol, you will find that the generally whatever the reaction is taking place for the preparation of alcohol, that is the nucleophilic substitution reaction or the nucleophilic reactions. In the case of phenol, the nucleophilic substitution reaction is not possible, and when you will see the substitution reaction, that is possible, but when you will see the addition reaction, the nucleophilic addition reaction is not possible at all due to the resonance, due to the reason that the benzene ring is highly stable and that cannot undergo addition reaction. So we are going to study the preparation of phenol in a different category, in a different process. So we are going to start with the aniline. So here it is aniline, NH2 group is attached on the benzene. और हमने पहले कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ द एरीन्स, सो डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ द कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल. सो हाउ वी विल प्रिपेयर द अल्कोहल, हाउ वी विल प्रिपेयर द फिनॉल एक्चुअली? तो हम इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं, वी गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाईएजोटाइजेशन. हम इससे एक डाईएजोनियम साल्ट बनाते हैं एंड दैट इज द बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट. You have already seen this compound in the reaction Sandmeyer reaction. In the Sandmeyer reaction, first you have prepared the diazonium salt, that is the benzene diazonium salt from aniline, and then you have converted it in the form of the haloarine. Here we have to prepare the phenol. So we are not going to use the cuprous halide. We are just going to use water, and with the help of the water, we are capable to form the phenol. So this is the method, the easiest method. When we treat aniline from sodium nitride and halo acid, somewhere you can also find instead of these of the two compounds, you can write NaOH, sodium oxahalide, which is diazonium salt, and finally that on hydrolysis is the phenol. Then this is one of the easiest method for the preparation of phenol from the aniline. The next compound is cumene. We are going to see that how to prepare the phenol from the cumene. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम यही भूल जाते हैं कि व्हाट इज क्यूमीन. देन क्यूमीन इज द आइसोप्रोपिल बेंजीन. आइसोप्रोपिल बेंजीन in general language called cumene. Then this is the isopropyl benzene. When this isopropyl benzene is treated with oxygen, it forms hydrogen cumene peroxide. This is the hydrogen peroxide, and next one is the cumene. Then hydrogen cumene peroxide. And when this oxygen cumene peroxide is treated with water in presence of peroxide and oxygen, it forms phenol along with acetone CH3COCH3. बहुत बार ऐसा होता है कि कन्वर्जन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट क्यूमीन इनटू फिनॉल. तो क्वेश्चन पूछने वाले ये डायरेक्टली ना पूछ के कि हाउ विल यू कन्वर्ट क्यूमीन इनटू फिनॉल, वो पूछ देते हैं हाउ विल यू कन्वर्ट क्यूमीन इनटू एसीटोन. So acetone is also prepared in this process, so you can write that acetone is prepared from the cumene. So you can write the preparation of acetone from the cumene, you can also write the preparation of phenol from the cumene. So both the compounds are going to be formed by this process, so cumene can be used for the preparation of the phenol. You can see that the very easy steps are here for the preparation of the phenol. Now we are going to see the preparation of phenol from chlorobenzene or from the benzene sulfonic acid. How will you prepare the phenol from these of the two different compounds? When you will treat these of the compound with the sodium hydroxide, what will be the product? The chlorobenzene will form sodium phenoxide.
NCM will be the benzoic acid, that is the sodium phenoxide. And when this sodium phenoxide is hydrolyzed under acidic medium, अगर सिर्फ आप हाइड्रोलाइज कर देते हैं सिंपल, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? वन विल बी द फिनॉल एंड नेक्स्ट वन विल बी द caustic, and they will again combine with each other, acid base neutralization reaction, and they will again form salt and water. So आपका रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा और प्रोडक्ट डोमिनेंट नहीं होगा, रिएक्टेंट डोमिनेंट होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एसिड कैटलाइज करते हैं, जिससे कि जो बाई प्रोडक्ट बने वो ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो कि फिर से रिएक्शन को रिवर्ट कर सके। सो एज ए रिजल्ट इट फॉर्म्स फिनॉल। साथ में साइड प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम साल्ट बनेगा। अब वो इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि आपने कौन सा एसिड यूज किया है। इफ यू हैव यूज्ड द HCl, द बाय प्रोडक्ट विल बी NaCl. इफ यू हैव यूज्ड द H2SO4, द बाय प्रोडक्ट विल बी द sodium sulfate or whatever it is. So these are some of the way for the preparation of the phenol by using the different compounds. There are some other ways are also available by which we can prepare the phenol, but we are discussing only this much. So now we are seeing the physical property of the alcohol and phenol. When we discuss the physical property, we discuss about those of the property which can be physically seen. जो भी उनकी प्रॉपर्टी दिखाई पड़ती हैं, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज को हम सिंपली कह सकते हैं दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी. सो सिंपली इफ आई विल से दैट व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, वी डिस्कस ओनली 4 प्रॉपर्टी. फर्स्ट वन कलर, सेकंड वन स्मेल या odor, third one boiling point and melting point, and last one is the solubility. Then what is the color of the alcohol? I think everyone have seen the different alcohols. आपने देखा है एथेनॉल लैब में आपके मिल जाता है, मेथनॉल भी आपके लैब में इजीली अवेलेबल है. सम अदर एल्कोहल्स विच इज जनरली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, दैट इज द शुगर. शुगर भी आपका कलरलेस होता है और वो भी आपने देख रखा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द शुगर. यू हैव आल्सो सीन द starch. Starch is also white colored solid. So these of the systems are colorless. So you can say that the alcohols are the species which are colorless. They don't have any color. Why they are colorless? There must be some reason. हर एक चीज के लिए रीजन होता है, बगैर रीजन के तो कुछ होता नहीं. तो क्यों alcohols are colorless? When we talk about the colors, why any of the species is capable to show the color? तो हम कहते हैं the color arises only due to the excitation of electron. It is the excitation of electron which is responsible for the representation of the color. तो हर एक कंपाउंड कलर तब देता है जब उसमें एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. अगर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा तो कलर देने के लिए कैपेबल नहीं है. अब क्या यहाँ पे अल्कोहल के केस में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? When you will see the members, the component of the alcohol, what are the component of the alcohol? You will find that alcohol is made by carbon, hydrogen and oxygen. And what is the electronic configuration of these of the three elements? The carbon have electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2. That means the valence shell is the second cell. And because of the second cell, they have the absence of d subcell. And due to the absence of d subcell, there is no chance for the transition of electron. And if the transition of electron is not capable, the carbon is not capable to show the color. Now, what's about the oxygen and hydrogen? Hydrogen have only one s subcell. And in the first cell, there's no any other subcell, neither any p subcell nor d subcell. And if this is the condition, then in these of the condition you can say again the excitation of electron in the case of the hydrogen is not possible. And if the excitation of electron in hydrogen is not possible, hydrogen is also not capable to show the color. So it is not the carbon or hydrogen which is capable to show the color. What's about the oxygen? When you will see the oxygen, electronic configuration क्या है? 1s2, 2s2, 2p4. So with the 2p valence shell, again the system have lack of the d subcell. फिर से सिस्टम के पास d subcell नहीं है, और अगर d subcell नहीं है तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है. और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा तो कलर कैसे शो करेगा? एक्चुअली कलर में 7 कंपोनेंट्स होते हैं, वॉट एवर कॉल्ड विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड.
ये 7 कलर होते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑफ द 7 कलर इज कॉल्ड व्हाइट एंड absence ऑफ ऑल द 7 कलर इज कॉल्ड ब्लैक. तो व्हाइट तो प्रेजेंस है, ब्लैक absence है, तो और सारे कलर कैसे आते हैं? When the light strikes, कोई भी लाइट यहाँ पे स्ट्राइक किया और उसमें से 2-4 कलर एब्जॉर्ब कर लिया इस बोर्ड ने, तो जो बचे हुए कलर आप तक पहुंचेंगे दे विल डिटरमाइन दैट व्हाट इज द कलर ऑफ द बोर्ड. अब ये एब्जॉर्ब क्यों करेगा? कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी कंज्यूम होगी तभी तो एब्जॉर्ब करेगा. कोई भी सिस्टम वो लाइट एब्जॉर्ब ही इसलिए करता है क्योंकि उसका एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के प्रोसेस में वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है जिसकी वजह से कलर रिप्रेजेंट होने लगता है, जिसकी वजह से सिस्टम अपने कलर को शो करने लगता है. देन इट इज द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर शोइंग द कलर. So due to the lack of the excitation of electron, due to the absence of d subshell in the case of the carbon and oxygen, and due to the absence of p subshell in the case of hydrogen, the alcohols are not capable to show the color. They are the colorless. Now the next one, that is the smell. It have a sweet smell, not very unpleasant smell. You can say sweet smell. Alcohol आपने smell किया हुआ है, ethanol smell किया है, दूसरे अल्कोहल्स भी आपने स्मेल किए हैं, दे आर स्वीट स्मेलिंग. इफ यू विल आस्क अबाउट द रीजन कि क्या रीजन होते हैं, तो एग्जैक्टली केमिस्ट्री इन रीजन्स को एक्सप्लेन करने के लिए कैपेबल नहीं है. स्मेल कब देते हैं, स्मेल कब देते हैं ये हम बता सकते हैं. व्हेन द सिस्टम विल गेट इवेपोरेटेड देन इट विल शो द कलर, अदरवाइज दे आर नॉट कैपेबल टू शो द कलर. सो द इवेपोरेशन ऑफ दीज ऑफ द सब्सटेंसेस आर टेकिंग प्लेस, सो दे आर कैपेबल टू शो द कलर. अगर आप ठंडे चावल को स्मेल करना चाहें, दे डोंट हैव एनी स्मेल. तो यहाँ पे स्मेल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इवेपोरेट हो पा रहे हैं, तो जो भी सब्सटेंसेस इवेपोरेट होते हैं वो स्मेल देते हैं और इनका स्मेल प्लीजेंट ही होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं. बट व्हाट्स अबाउट द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट? द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई. Actually, when you will compare the boiling and melting point of the alcohol with other organic compound, you will find that it have the highest boiling and melting point just after carboxylic acid. Carboxylic acid के बाद सबसे ज्यादा boiling and melting point होता है. And how we determine that any of the substance have higher boiling point or lower boiling point? Theoretically, we see two different things. The first one, the molecular mass. So alcohols are different alcohols, methanol, ethanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol. तो इतने सारे alcohols हैं, तो molecular mass को आप generalize नहीं कर सकते. तो आप क्या देखेंगे? It will be the intermolecular attraction force. What type of intermolecular attraction forces are there? When you will see about the intermolecular attraction force, the alcohols, that is the ROH, have hydrogen directly attached on the oxygen, and as a result it is capable to generate the hydrogen bonding. तो alcohols hydrogen bonding generate करने के लिए capable होते हैं, which is one of the strongest intermolecular attraction force. और इस strong intermolecular attraction force के होने की वजह से alcohols have very heavy boiling and melting point with respect to other organic compound. But why lesser than the carboxylic acid? Because carboxylic acid have tendency to undergo dimerization. Alcohol doesn't dimerize, तो यहाँ पे उनके dimerization की वजह से carboxylic acid का boiling melting point higher हो जाता है. So alcohols have higher boiling and melting point due to the capacity to form the hydrogen bonding. Now the next one, that is the solubility. What's about the solubility? When we talk about the solubility of any organic compound, we talk about the solubility of that compound in water. So whether the alcohol is soluble with water or not, alcohols are soluble with water. And why it is soluble with water? Because of the hydrogen bonding. When you will see, this is the alcohol, ROH, and this is water, HOH. Alcohol seems as a substituted water molecule. वाटर सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल की तरह ही वो दिखाई पड़ता है, लगता है कि एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक एल्किल ग्रुप आ गया. एंड व्हाट आर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस इन द केस ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर? इन दिस केस देयर वाज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द ऑक्सीजन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द हाइड्रोजन, एंड सेम इन द केस ऑफ द वाटर. Water is also known for their capacity to form the hydrogen bonding. As these two compounds, that is alcohol and water, have almost identical boiling and almost identical intermolecular attraction force, so they have solubility with each other. How the substances get soluble
actually when alcohol molecules are attached with each other with the help of the intermolecular attraction force, with the help of the intermolecular hydrogen bonding, when these of the intermolecular attraction force breaks, this releases some energy, and if the energy which is released during the breaking of these of the molecule from each other, whatever the energy is released, if that energy is capable to break the hydrogen bonding of water, that the intermolecular attraction force of water that is capable to dissolve with water, and if that is not capable to break the hydrogen bonding of water, that is not capable to dissolve in water, and this is the concept of the solubility. So alcohols are colorless, they have sweet smell, they have high boiling point as well as melting point, and when you will talk about the solubility, they are soluble, and they have high boiling and melting point because of the hydrogen bonding, and similarly they are soluble with water because of the same reason, because of the intermolecular attraction force. I think it's clear to all of you. In the next video we will discuss about the chemical properties of the alcohol. Till then, have a nice day. Bye. Thank you.